Your voice is a little bit low. Okay. How about You're not audible. still audible? My voice is not clear. Now it's clear. Now it's clear. Okay. I'm asking, how are you? Fine, sir. How are you? Fine, I'm also good. So what chapters have you completed in 12th? In CBSE? No, JEE, for JEE. Sir, the other sir was doing Investigo. Investigo. Okay. So how much you know about Investigo? Yeah, some formulas I have studied. So, do you know the graphs of Investigo? What's that? Do you know the graphs of Investigo, domain range, etc.? No. Can you tell me what is a inversion? Inversion? Inverse function. What is inverse function? Okay. And see, no need to hesitate. All right, we are here to learn. Okay. So if you do not know, say that I do not know. All right, that's okay. Okay. So if I write, let's take this y equals to 2x. Okay, very simple function with this. Let's make a table. This we have been doing childhood. X and y. If x is 0, what is the value of y? 0. If x is 1, then y is 2. If x is 2, then y is 4. 4, and so on. Right? What this means, we are arranging two things, right? Here, this is called domain, right? And the values they brought out, these are called range. Yes or no? Yes. If function is a path, right? This y equals to 2x. This is the path you are following to go from 0 to 0, 1 to 2, 2 to 4, right? Yes, sir. This inverse function is the reverse path. Okay, the reverse path. All right. Yes. What functions choose that I will get 0 as the output when I input 0, 1 as the output when I input 2. This is clear. Yes, sir. So what we do, we very simply we write this is like this. So we write x is equal to y. All right. Then we replace x with y. Okay. So y equals to x by 2. This is the inverse function to this function. All right. How? Let's make a table. If I put x and y, x is 0. What is the value of y here? 0. 0. If I put x equals to 2, then y is 1. If I put x equals to 4, then y is 2. Do you see the pattern? The function was giving 0, 0, 1, 2, 2, 4. This is giving 0, 0, 2, 1, 4, 2. Just the inverse of this, yes or no? Yes, sir. So this is what was function is. Okay. This is clear, Shahid? Yes, sir. Clear. Do you know what is a bijective function? Which is 1, 1 and on 2. Right. 1, 1 and on 2. 1, 1 and on 2 means all the elements should be related to all the elements of this part and singularly selected. मतलब एक के साथ एक ही रिश्ता होना चाहिए, right? Yes. Remember this inverse function
is only possible for bijective functions. All right. Yes. अगर कोई भी bijective function नहीं है, then inverse function will not exist. Okay. Yes. Let's see now inverse Tycho function. Do you know the graph of sin x? Graph of sin x And yes. like this, right? Yes. Okay. Can you tell me if this is bijective function or not? No. No, right? So can I find inverse function of this? No. No. But there is a chapter, inverse Tycho, right? Yes. So what did we do? I told you that if a function is not bijective, then inverse will not exist. But we are studying inverse function. So what happens here? We say that I removed the graph of this part, this and this I removed. I'm only looking at sin x from here to here, which is this is minus pi by 2 and this is pi by, okay? Yes. Got my point? What? Yes. Yes, got it. Getting my point? What I'm saying? Yes, sir. I'm good. Now if I draw this graph only, can you tell me if this function is bijective or not? Yes, it is. Yes. So can I find inverse now? Yes. Okay. So remember this. When I write sin x equals to y, how to find inverse? I told you, right? X equals to some form of y. I can write like this, right? Yes. Now replace x and y. So I can write y equals to sin inverse x. Okay. Yes, sir. Do you remember all the trigonometric values? Yes. Okay. What is sin 30? 1/2. 1 by 2. Very good. In radian form also sin pi by 4. 1/√2. 1 by 2. Very good. Now look at here. In this function, we are putting angles, right? Yes. And the values we are getting where? Numbers, like values, right? Yes. So if I'm finding inverse, so what happens? I will be putting values and I'll be getting the result as angles. Yes or no? Yes, sir. This thing is clear? Yes. Okay. And remember this also, we restricted the graph minus pi by 2 to pi by 2. Yes? Yes. This is called principal range. Okay? Because the output will be angle side. So the value of y will be from minus pi by 2 to pi by 2, both including yes or no. Yes, sir. So this is called principal range. All right. Yes. Very important, extremely important. Remember this, that range of sine inverse x is from minus pi by 2 to pi by 2. Okay. Let's think about domain. What is maximum value of sine x? What's it? What is the maximum value of sine x? 1. 1. And minimum value? 0. This graph, sine x is maximum 1 and minimum is minus 1, right? Yes. So domain of sine x, if I write sine x, then say this is from minus 1 to 1 and range is from minus pi by 2 to pi by 2 because we restricted. So if I take sine inverse x, the domain will be minus pi by 2, just ulta of that, to minus 1 and 1. This is clear? Yes, sir. So I wrote
Already this is inverse, this is end. Okay. So domain of sine inverse x is -1 to 1, and this minus half to half, minus pi by 2 to pi by 2. And this will be domain in range of sine x. यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Okay. Now one more point. Why is this called principal range? Why so? Because see, I told you we broke the graph from here to here. But आप कहते कि sir, why only this? I will draw the graph like this. This is also bijective, right? Yes. So why not take this graph? So this is also possible. So these are different ranges according to different questions. Okay, they will always mention that x will belong to from where to where. Okay, mainly we take principal range. All right. Yes or no? Yes, sir. यहाँ तक नोट कर लीजिए प्लीज. Mainly Your voice is very low. I can't. just let me change the earphones. Okay, give me 2 minutes. You write it down. Okay. 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 Am I audible now? Yes, sir. Okay. Have you written this down? Yes. Okay. Let's see some values. Let's find some values actually. So this is clear. Sine inverse x will take the values from -1 to 1, right? And Yes. will output minus pi by 2 to pi by 2. Okay. So if I ask what is sine inverse half? Pi by 6. And sine inverse minus half? Minus pi by 6. Okay, this way you can calculate all the values. Yes. Okay. Now what about cos inverse? Cos का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, right? Yes, sir. And what we do? We break the graph from here to here, 0 to pi. All right. So we take the graph as this only. All right. Yes, sir. Remember this domain and range of cos x, and this is 0 to pi. Range we get -1 to 1, similar, right? Yes. So cos inverse x में उल्टा हो जाएगा, -1 to 1, but 0 to pi. Okay. Yes. Please write it down. Sir, -1 to 1 and 0 to pi are ranges. Then I can Minus. say. No. This is domain. This is range. This is domain. This is range. Right? In a relation,
this is given like this, right? Domain Yes. and codomain actually, and codomain is generally range, right? Yes. So this is what I'm writing. This is domain and this is range. Okay, of cos x, of cos inverse x. All right. Yes. Done. Yes, sir. What about tan? Do you remember the graph of tan? Tan theta? Yes. Okay. Minus pi by 2 and this is pi by 2. So here also, what is the range of tan theta actually? Can you tell me maximum minimum value? Minus pi by 2 to pi by 2. This is tan inverse, right? Yes. What you are saying? Tan theta. If I write tan theta Real की numbers. maximum value क्या होगी? Look at the graph. This is graph of tan theta, right? Yes. What is the highest point of this graph? Highest point. कहाँ तक जा रहे हैं graph? Real numbers. Yes, all real numbers, right? So domain is here minus pi by 2 to pi by 2, but not including. The range is infinite, right? Minus infinite to infinite. Okay? Yes. Not clear? Clear, sir. Okay. Tan inverse x उल्टा हो जाएगा. Minus infinite to infinite till minus pi by 2 to pi by 2, not including. Got it? Yes, sir. Okay. Same way, can you tell me the graph of cot or domain range of cot? Cot x with Domain restrict. 0 to pi. So Very good. open interval. Range will be real numbers. Range will be minus infinite to infinite. So cot inverse x. Real numbers to 0 to pi. Real numbers to 0 to pi. Very good. So let's do few questions. Okay. We'll look at cosec and sec also, but let's see few questions on this only. They are saying find the range of f of x, which is equals to tan inverse under root x square minus 2x plus 2. All right. Yes. Will you try solving this or should I solve this? See, inverse function में क्या होता है? Can you tell me domain and range of tan inverse x? Look at the copy. Real, minus infinity to infinity. Domain. Right. Range minus pi by 2 to pi by 2. Very good. They are saying if x is from minus infinite to infinite, then the total value range will be from minus pi by 2 to pi by 2. Yes. But here x is not there. This is some function. Suppose I call this t. Right? Yes. So I have to look at what values t provides. Right? T की value कहाँ से कहाँ तक है? Yes or no? Yes. If I figure that out, then I will get the answer. Yes or no? Yes. Okay. What is t? अब सब कुछ चेंज हो गया. अब फंक्शन हमारे पास बन गया t, which is this.
क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी आती है और मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी आती है? Yes, sir. कैन यू टेल मी? The range यस, रेंज 0 to infinity. 0 to infinity. आर यू श्योर? Yeah, yes, You are half right. If I write under root x, this is 0 to infinite, right? yes. But if I write x plus 1, 2 to infinity. sorry, For this 1 to infinite. no. x plus 1 also 0 to infinite, because x की वैल्यू में -1 रखते ही 0 बन रहा है ना. Yes, But if I write under root x square plus 1, then इसकी वैल्यू कभी -1 हो भी नहीं सकती, right? yes, So this will be from 1 to infinite. yes. Now look at this function. Can I write this as x square minus 2x plus 1 plus 1 under root? Yes or no? Yes, yes, So this is x minus 1 whole square plus 1 under root. Yes or no? yes. इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0, 0. तो इस टोटल की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1, तो अंडर रूट उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1. 1, yes. मैक्सिमम कितना होगा? Infinite. Infinite. Now look at this. We have changed the domain from 1 to infinite, right? Yes, तो मैक्सिमम वैल्यू तो सेम रहेगी, which is pi by 2. yes. But minimum tan inverse 1, which is Pi by 2. tan inverse 1. 1 कब होता है tan theta? Pi by 2. Pi by 2 is tan 90 is Not defined. not defined. So 1 कब Pi आता by है 4. 10? Pi by 4, right? ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं, right? So this is the range. Yes, Clear? yes, clear. So this is the type of question you will face in basic domain and range questions. Okay? Yes, ये बात समझ में आ गई ना कैसे सॉल्व किया हमने? yes, yes. All they used is the knowledge of this domain and range, right? बाकी ये मैक्सिमम मिनिमम तो निकालना बचपन से आता है हमें. Yes. Cosec, what is the graph of cosec? Or just write the domain and domain and range. Cosec का बताइए. Domain Minus pi by 2 to pi by 2. Okay. -0. Minus 0. Very good. And range? Real number -2n plus 1 pi by 2. Can you repeat? Real number -2n plus 1 pi by 2. Okay, you are saying real numbers minus n pi, n pi. n pi. That is no. हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना, देखिए यहाँ पे पहले माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. सो यहाँ क्या होगा? -1 से 1. Okay, Yes, got it? yes, sir. Got it. This is another way of writing this, minus infinite to -1, including this, and union 1 to infinite, right? Yes, Okay, so इसका उल्टा cosec का इनवर्स का उल्टा क्या आ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट टू -1 union 1 to infinite minus pi by 2 to pi by 2, but cannot be 0. Okay, yes, sir. any doubts in this? No, sir. Who remains sec? Zero to pi, right? Yes. Minus pi by 2, and same range is same. So sec inverse x r minus -1 to 1 to 0 to pi minus pi by 2. All right, Yes, sir. got it?
But So remember this, all the formulas, everything, तीन चीजों के ग्रुप बना लेंगे हम. Okay, sin, cosec and tan, inverse x, inverse x, inverse x, and cos, sec and cot. ठीक है, आप इनके जब देखेंगे ना डोमेन रेंज तो सिमिलर है, राइट? बस ब्रैकेट्स ऊपर नीचे होते हैं. ये -π/2 से π/2, ये 0 से पाई. ओके, yes, बस ये देख लेना ब्रैकेट्स में क्या चेंजेस है. और ये ध्यान रखना आगे के फॉर्मूलेस में भी ना ये तीनों बहुत काम आते हैं, ये तीनों साथ में चलते हैं. ओके, yes, हमेशा ध्यान रखेंगे sin cos tan, sin cosec tan, cos sec cot. Got it? yes, sir. Let's solve one more question in this. Okay, you have to solve this. Find the range of f of x equals to 2 cos inverse minus x square minus pi. Okay, same process. All right. Can you try this? Yes. Getting the answer? No. शाहिद, कर रहे हैं आप? Sir, ठीक है, What, फिर से uh, वैसा ही है. not getting answer. ओके, नो इश्यूज. ठीक है, क्वेश्चन इज 2 cos इनवर्स minus x square minus pi. फिर से देखिए, हमें इसका रेंज तो पता है, राइट? Yes. क्या होता है? 0 to cos pi. इनवर्स 0 to pi, राइट? बट ये कब होता है? जब -1 से 1 हो, राइट? Yes. यहां पर लेकिन x की जगह क्या है? -x². तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 to pi. नो, x² की वैल्यू कहां से कहां तक? रेंज क्या होता है x² का? 0 to pi. 0 to infinity. 0 to infinite. तो -x² का कहां से कहां तक होगा? 0 to minus infinity. राइट. सो कैन आई से -∞ to 0? Yes. बट cos इनवर्स के अंदर हम -∞ तो रख नहीं सकते. सो कैन आई से -1 to 0? यस और नो? Yes, sir. तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है? -1 से 0, Yes. राइट? Yes. सो मिनिमम तो सेम ही रहेगा. यस और नो? Yes, sir. नहीं बात आ रही समझ में? No, understood, sir. Understood. अंडरस्टूड? Yes. तो 0 पे 1 होता था, तो ये क्या होगा? पाई. 0 कब होता है? π/2. सो कैन आई से दिस इज π/2 to pi? यस और नो?
Yes, sir. This is absolutely clear. Yes, sir. Minus pi by 2 to pi. नो नो नो, रिमेंबर cos की वैल्यू 0 से पाई तक होती है, Okay. राइट। नेगेटिव कहां से कहां होता है, पाई बाय 2 से पाई पे cos नेगेटिव होता है ना। Yes. तो यहाँ -1 से 0 है, सो पाई बाय 2 टू पाई। ओके, Okay. तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, पाई बाय 2 से पाई, तो 2 टाइम्स करते हैं इसको, 2 इज मल्टीप्लाइड Pi to 2 pi. पाई टू 2 पाई। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट पाई, so range will be 0 to pi, yes or no? Yes. No? Understood. Okay, so very simple question, yes. Yes. You can write down the solution if you want. Oh, आइडिया लग रहा है ना कैसे सॉल्व कर रहे हैं। yes, sir. That is very important. Building the approach is extremely important. Roads. Now next formula, देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो साइन इनवर्स बड़ा वैसा है, मूडी इंसान है, राइट। इट इज वेरी मूडी, इट टेक्स स्पेसिफिक वैल्यूज, राइट, Yes, sir. ओनली -1 से 1, एंड इट आउटपुट्स -½ से ½ Yes. yes, Yes, sir. but sin can eat anything, he likes every vegetable, right। घर Yes, का sir. अच्छा बच्चा है ये, तो इसको कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो साइन ऑफ -π/2 to π/2, the result will always be from -1 to 1, yes or no। Yes, sir. तो ये वैल्यू डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ओके, Yes. Yes, sir. if sin and sin inverse x is there, then you can directly write x. Same for cos of cos inverse x is x, same for tan, and so on, right? Everything you can write directly x. This is clear Yes, sir. for every function. Now second note, same way can I say इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, x, Yes. yes or no? Yes, sir. No, क्यों? क्योंकि देखो sin x बड़ा समझदार इंसान है, x की वैल्यू कैन बी एनीथिंग, राइट, Yes, sir. yes or no? Yes, sir. And it can output the value, but remember sin inverse जो है वो specific values देता है, right? Yes. Only returns specific values, which is -½ to -π/2 to π/2, yes or no? Yes, sir. But suppose I put 5π/4 here, तो साइन इनवर्स को नहीं पता चलेगा कि ये π/4 वाला है या 5π/4 वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ये आउटपुट में क्या दे देगा, π/4। So this is only true when x belongs to principal domain, okay, sorry, principal range। मतलब Can you x की repeat, वैल्यू जब जब, सॉरी, can you repeat this thing? यस, अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, मैं x की वैल्यू अगर 5π/4 रखूं, ठीक है,
Yes. तो ये कितना है 1/√2, Yes. सॉरी माइनस, एक्चुअली इसको ऐसा कर लो 2π/4 कर लो तो 9π/4 रख लो. ओके, तो इफ आई पुट x इक्वल्स टू 9π/4 तो sin x कितना होगा 1/√2 Yes, sir. एंड sin इनवर्स 1/√2 इज π/4. 5/4. हमारे पास x की वैल्यू कितनी थी 9π/4, बट हमारे पास आंसर कितना निकल के आया π/4. आर दे इक्वल? No. तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता. ये कब ट्रू होता है? जब x की वैल्यू प्रिंसिपल रेंज हो, which is principal range -π/2 to π/2. Okay, Yes. getting my point? Yes, sir. So remember this. अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स x है तो आप डायरेक्टली x लिख सकते हो, बट साइन इनवर्स ऑफ साइन x है तो आपको देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है. ऑलराइट? Yes, sir. Okay, I hope this is clear. So please write it down. Cos inverse of cos x, इसमें सारे में लिख देना x must belong to principal range. All right, Yes, sir. please note it down. आप अच्छे से लिख लीजिएगा. Do you want me to write it very clearly or you can do it? It's fine. It's fine. Okay. Done, sir. Okay. So let's solve few questions. इसे फिर करेंगे ऐसे. Suppose I give you sine of sine inverse half. Can you tell me the answer? 1/2. 1/2, राइट? क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स है तो ये सीधे हम काट सकते हैं. ऐसे काटना मत, काट सकते हैं बट हाफ. ओके, Yes, sir. ये कितना होगा 5/4. 5/4 और 5π/4. 5. No. 5π/4. Yes. नो, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा. देखिए टेन इनवर्स बाहर है ना, Yes, sir. सो वी हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द आउटपुट और रेंज ऑफ टेन इनवर्स x. -5/2 to 5/2. वेरी गुड. Fine. डज 5π/4 lie between this? No. No. So what we have to do, we have to solve this. And how to solve this? Remember, इसको simplify करना पड़ेगा. All right, it will be taking few steps. तो इसको हम simplify कैसे करते हैं? 5π/4 को we can write 4π plus π/4. Yes. Yes, sir. So can I write this as tan inverse tan pi plus π/4? Yes. And tan pi plus theta is Opposite. tan Tan theta. 180 degree Yes, sir. tan theta or negative tan theta. Positive tan. Positive tan theta. So this is
tan इनवर्स tan pi by 4. अब आप देख सकते हैं pi by 4 lies between this, so the answer will be pi by 4. Okay? Yes, sir. No doubts in this? No doubts. Okay, एक क्वेश्चन आप करेंगे? Yes. For you, let's see. Cos inverse cos of 4 pi by 3. Okay? Yes. Minus pi by 3. Minus pi by 3. Cos inverse x का रेंज क्या होता है? 0 to pi. So does minus pi by 3 lie between 0 to pi? No. No. So think again. और ये बात समझ में कहाँ गलती होगी? Pi by 3 lies. Pi by 3 lies. But is it true? Pi by 3 या आप फोर्सफुली आंसर मैच करने की कोशिश कर रहे हैं? 4 pi by 3 doesn't lie. So हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको. Cos inverse cos of, can I write this as 6 pi minus 2 pi by 3? Yes or no? Yes, sir. 3 pi plus pi by 3 also can lie. Yes, but remember this, pi plus pi by 3 जब आप करेंगे तो यही दुविधा आएगी जो आपका आंसर आया है. Yes, sir. You got what? Minus cos pi by 3, right? Yes. Yes. Okay. And what is cos pi by 3? What is the value? 1 by 2. By 1 by 2, right? Half. So this is cos inverse minus half, right? Yes. आपने वैल्यू लिख दी minus pi by 3, बट minus pi by 3 में minus half नहीं होता है cos की वैल्यू. Cos is positive in the fourth quadrant, right? Yes, sir. So you have to think कि cos पहली बार नेगेटिव कब होता है, which is at 2 pi by 3. Yes? Yes. तो आपने ये गलती कर दी. आगे समझ में? Yes, sir. तो आप इजीली सबसे पहले ये लिख सकते थे हमेशा. ओके, तो ये cos इनवर्स cos, दिस इज 2 pi minus 2 pi by 3. तो 2 pi minus theta is also cos theta, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. Yes. So cos inverse cos 2 pi by 3, this lies between the ranges, so the answer is 2 pi by. कुछ आया समझ में या बहुत जल्दी पढ़ा दिया मैंने? Understood, sir. Understood. Okay, so let's ask you few formulas. ठीक है, इनवर्स टेगो के अंदर नेगेटिव. ठीक है, we'll name Yes. this formula inverse टेगो के अंदर नेगेटिव. So do you know what happens if I put sin inverse minus x? क्या होता है इसके साथ? Minus sin inverse x. वेरी गुड. ऐसे ही मैंने आपको बोला था ना, कौन तीनों साथ रहेंगे? Sin, tan, cosec. cosec. तो सबके साथ क्या होगा? यही चीज. ओके, Yes. दिस इज क्लियर. Yes, sir. बचे कौन तीन? Cos, cot, and sec. इनके साथ क्या होता है? व्हाट इज cos इनवर्स माइनस x? Pi minus cos inverse x. वेरी गुड. सो प्लीज राइट इट डाउन. ठीक है. Yes.
ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट्स सी। लिख लिया आपने? यस सर। यार एक चीज ध्यान रखना, आपको प्रिंसिपल रेंज ना ऐसे याद होना चाहिए, मतलब इन फिंगर टिप्स। ओके, कि 0 से पाए, ये पाए, वो पाए। एंड एक चीज याद रखो, 0 से पाए दिस इज रेडियन, राइट? यस। पाए की वैल्यू कितनी होती है? 180 नॉट इन डिग्रीज, वैल्यू। और 3.14। राइट? यस। So remember this, 0 to pi means 0 to 3.14. Okay? यस तो उन्होंने एक ऐसे क्वेश्चन बना के दिया था, देखो, evaluate cos inverse cos of 10. Okay? They are not saying this is 10 degree, this is 10 radian. Getting my point? यस सर। हमने अभी अभी सीखा कि cos inverse cos x सीधा x हो जाता है कब? जब x की वैल्यू 0 से पाई होती है, राइट? यस सर। दैट मीन्स 0 से 3.15 के आसपास होती है, राइट? यस। बट यहाँ कितना है? 10। तो 10। ये आउटसाइड द बाउंड्री आ गया ना? यस और नो? यस सर। तो हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखिए, रिमेंबर दिस, अगर पाई इज 3.14, so 3 pi I can say this is almost 10, right? यस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, this is cos inverse cos, can I write this as 3 pi plus 10 minus 3 pi? Yes or no? यस सर। So cos of 3 pi, suppose this is theta, and remember 3 pi is also almost 10 but slightly smaller than 10. यस। तो ये जो 10 minus 3 pi है, क्या ये 0 से पाई के बीच में लाइन नहीं करेगा? यस। करेगा ना? यस सर। तो cos 3 pi plus theta क्या होता है? What is cos 3 pi plus theta? माइनस थीटा। Minus theta. Very good. Minus cos theta, right? Minus cos theta you say. यस। So cos inverse, can I write minus cos 10 minus 3 pi? Yes or no? Not getting this? नो सर। Okay. See, this is theta. बस इतना देखिए. Cos of 3 pi plus theta is minus cos theta. Yes? यस। तो ये अंदर की पूरी वैल्यू we can replace with minus cos theta. यस सर। That is what I did. Cos inverse की जगह cos inverse. Got it? यस सर। Okay. Now एक चीज ध्यान रखना, ये बिल्कुल याद रख लो, इनवर्स के अंदर कभी नेगेटिव नहीं रखते, पाप चढ़ता है। ओके? यस सर। व्हाट इज cos इनवर्स नेगेटिव x? पाई माइनस कॉस इनवर्स। So can I write this pi minus cos inverse cos of 10 minus 3 pi? Yes or no? यस सर। And we already saw this value lies in principal range. यस सर। तो सीधा इसको हटा सकता हूँ ना, काट सकता हूँ। यस। तो क्या बन जाएगा? pi minus 10 plus 3 pi, which is 4 pi minus 10. Understood? यस सर। ओके। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिखते हैं बट ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ओके, यस सर। प्लीज राइट इट डाउन।
Done? Yes, sir. Done, sir. Okay. 2 question for homework. Okay. tan इनवर्स, अरे समझ में आ रहा है ना जो कर रहे हैं? Yes, sir. ओके, सो 2 क्वेश्चन फॉर होमवर्क. tan इनवर्स tan 6 को पाई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वी नो tan इनवर्स के अंदर माइनस पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 2 आना चाहिए, राइट? Yes. सो व्हाट इज पाई में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 6 के आसपास मिल जाए? 2 pi. 2 पाई, वेरी गुड. तो यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करेंगे आ गया ना मैं समझ में? Yes, sir. Okay. So next question, this question and this question, next question is homework. If they are saying x is equals to sine inverse sine 10 and y equals to cos inverse cos 10. Cos inverse cos 10 के वैल्यू ऊपर से छाप मत लेना, खुद से डिराइव करना. Okay? Yes, sir. Then find or then the value of y minus x is, options are 7 pi, 10, 0, pi. Okay? Yes, sir. फटाफट लिख लीजिए. एक दो प्रॉपर्टी और कर लेंगे फिर हम. Done, sir. Do you know this formula? Sine inverse x plus cos inverse x. What happens? Pi by 2. Very good. Please write it down. Right. Second one, tan inverse x plus Cot cot inverse. inverse x. Yes, pi by 2. Complementary angles are added, right? Cosec x plus sec inverse x is pi by 2. Okay. Yes, sir. Please write it down. x की वैल्यू यहाँ पर तो -1 से 1. Here x belongs to minus infinite से infinite. Here x belongs to r minus -1 से 1. Okay. Yes, yes, sir. Write it down. इनवर्स में बहुत जरूरी है प्रॉपर्टीज का याद रहना. ऑलराइट, प्रॉपर्टीज भूल गए तो फिर क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं. Yes, sir. वन मोर प्रॉपर्टी. ये बताओ ये क्या होता है? साइन इनवर्स 1/x क्या होता है? Cosec inverse. वेरी गुड. ऐसे ही cos इनवर्स 1/x क्या होता है? Sec inverse. सेकंड. एंड tan इनवर्स 1/x. Cot inverse. यहाँ 2 होते हैं, cot इनवर्स x एंड पाई माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x. ओके. कब कब होते हैं? जब when x is positive, x is less than 0. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Note it down. Done, sir. ओके. कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. tan ऑफ cot इनवर्स -3/4 दिया है. एवल्युएट. ओके. Yes. इफ वी हैड tan ऑफ tan इनवर्स समथिंग तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली x लिख देते हैं, राइट? Yes. बट यहाँ पर क्या है? cot इनवर्स समथिंग. तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? देखिए सोचते कैसे है ना. tan ऑफ tan इनवर्स x हमें पता है कि x होता है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, राइट? Yes, sir. तो मैं कुछ भी करके इफ आई मेक दिस cot इनवर्स एज tan इनवर्स
तो मेरी जिंदगी बहुत इजी हो जाएगी। Yes. तो कैसे कर सकते हैं? डू आई नो एनी फॉर्मूला जिससे कॉट इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाए? tan इनवर्स में। Yes. So what I can use? I can use this tan inverse x plus cot inverse x equals to pi by 2, right? So we can use tan inverse 1 by x is equal to cot inverse. Yes, but remember to use the negative formula then, because x is negative here. Yes. And you are converting cot into tan, so remember to add pi, right? Yes, sir. This will go to this side. So इससे better ये है कि ये use कर लो, क्योंकि most of the cases में मैंने देखा है students forget this formula. Yes. चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, सीधे cot inverse x लिख देते हैं वो 1/x को, right? But ऐसा नहीं होता. Okay? Yes, sir. So better to use this formula, right? Why not? We can use this. Yes or no? Yes, sir. So can I write this as tan of pi by 2 minus tan inverse minus 3 by 4? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now you can do this. Solve it. Get the answer. Okay. Yes. Actually यहाँ फिर से कॉट बन जाएगा ना, जहां तक मुझे लग रहा है. Yes, sir. Oh, तो फिर ओके ओके, लेट्स यूज अनदर प्रॉपर्टी. माय बैड. यहाँ तो फिर से पाई बाय 2 से कॉट बन रहा है ना. एक काम करते हैं, इसको tan of cot inverse minus 3 by 4 है. First, let's use this formula. Cot inverse minus x. What is the formula? Pi minus cot inverse. Right. So can I write this as pi minus cot inverse 3 by 4? Yes or no? Yes, sir. So now what happens? Tan pi minus theta. We What is tan pi minus theta? tan pi minus theta minus tan theta. Very good. Now you can do what you wanted, right? Positive आ गया अंदर, तो उल्टा करके लिख सकते हैं, right? Yes, sir. The property you are mentioning. Yes, sir. इसका आंसर सीधा कितना आ जाएगा? -4/3. ऑल राइट. Yes, sir. आया कुछ समझ में? Yes, sir. Yes. ओके. सो ये जो 1/x वाला फॉर्मूला है ना, ऑलवेज रिमेंबर टू यूज इन पॉजिटिव्स. नेगेटिव में मोस्ट प्रोबेबली यू विल डू सम मिस्टेक. ओके. Yes, sir. So always convert this negative like this using this formula. Okay. Yes, sir. All right. So यहाँ तक कोई doubts नहीं? No, sir. Okay. So this is all for today's class, Shahid. Okay, sir. I hope you understood everything.